Today we have with us two of our AMA stars, Yash Raman, who has qualified for CDS IMA. It's his first and maiden attempt, and his AIR ranking is 46, and he cleared his SSB from 17 SSB Bangalore in July, right? Which July? 17 July, 17 SSB. Yes, sir. Okay, great. And he'll be joining IMA in the first week of January. And along with Yash, we have Devanshu Maru. He was also our student. Which batch, Devanshu? 51. 51. And AMAS 55. 51 and 55 batch. And he's cleared SSB for OTA CDS. This was his second conference. And he cleared from 34 SSB on 12th October. So let's welcome them with a big round of applause. And as is our tradition, first we will present them the tie and the cup, and then followed by a little interaction and to know what has been the secrets of success. So from that, I want each one of you to make some points which you can incorporate in your preparation for SSB. Okay. So first, I'll present the tie and the cup. So let's first go to, since he's standing now next to me, Yash. So what has been your secret of success and your journey? Thank you everyone. Thank you sir. So my secret of success तो तुम्हें यही मिल जाएगा. The thing is the proper guidance, and with proper guidance comes the confidence. 9 जून को मेरा बैच एंड हुआ था एंड 19 जून को मेरी एफकेट एंट्री थी सबसे पहले, एंड मैं वहां से हुआ था स्क्रीन आउट. बट सर ने लास्ट डे मुझे ये हम लोग को सबको ही बोला था कि जरूरी नहीं तुम जाते ही रिकमेंड हो जाओगे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द प्रैक्टिस यू डू हेयर यू हैव टू डू एट होम. न्यूज़ पढ़ो डेली, ठीक है, और एमास नोट्स रिवाइज कर लो. स्ट्रक्चर्स तुम्हारे माइंड में छप जाने चाहिए. तुम यहाँ से जाओ, इतना देखो उन्हें जो तुमने ड्राइंग बनाई है कि वहाँ छप जाए. यू वोंट बिलीव, मैं ऐसे जीटीओ ग्राउंड में गया और वहीं एसएसबी बैंगलोर में, एंड पीजीटी में ऐसा कर रहा था कि ये तो सॉल्व हो जाएगा, आगे वाला देखता हूँ, आगे वाला सॉल्व हो गया, इम्पास भी ऐसे सॉल्व हो गया मुझसे. तो आई वाज लाइक फुल इन कॉन्फिडेंस. एंड देन अभी आई डोंट नो सर इनका कमांड टास्क हुआ है कि नहीं. कमांड टास्क में सबसे पहले बोलेंगे कि ब्रीफिंग दो अपने हेल्पर्स को, एकदम वैसी. इवन जीटीओ विल लुक टू यू बिकॉज एक तो मैं फ्रेशर था एंड उसके बाद जब मैंने ब्रीफिंग दी फुल जोश में और पूरा एग्जैक्टली बोला, तो वो भी देख रहा था जीटीओ भी कि जी कितना मतलब कॉन्फिडेंस में. और व्हेन यू शो योर कॉन्फिडेंस वो अंदर से आ जाता है कि भाई हाँ मैं लीड करूँ. एंड द थिंग वाज, सर ने बोला था कमांड टास्क में तुम पे प्रेशर डालेगा इफ यू हैव पोटेंशियल, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली पुटिंग प्रेशर ऑन मी कि 2 minutes left, 30 seconds left. And even last task में my helping material broke down. बल्ली सर वो बल्ली इतनी गीली हो रखी थी, मुझे मिली थी. I used the बल्ली as a fulcrum for a bridge. टूट गई वो. And I was a helper, subordinate for 5 friends. तो उनको वो बोल रहा था कि okay, understood the idea, move ahead. मेरे को कहता यश, you have broken your own resource, tell me how will you do it. और मैं ऐसे खड़ा because मैंने तोड़ दी, तो मुझे थोड़ा सा ब्लैंक हो गया कि टूट गई, अब क्या करूँगा. बट देन आई काउंट माई सेल्फ डाउन, मैं कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा. एंड फिर मैंने उसको यूज़ करके, मतलब रूल्स तो अप्लाई होंगे, जो एक 5 रूल्स लिखवाएंगे सर, उसको भी रट लेना. 5 गोल्डन रूल्स तो सबसे तुम्हें ऐसा लग जाएगा 5 गोल्डन रूल्स कहाँ लगाऊं, तो वो कर लेना. एंड इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, मैं पर्सनली यहाँ पे भी डरा हुआ था और सर ने बोला था यहाँ क्यों डर रहे हो, यहाँ मत डरा करो, इधर मत डरो, तो वहां पे भी डरोगे. पर मैं यहाँ थोड़ा डरा हुआ था. बट ऐसा होता है यहाँ डर निकल जाता है, प्रैक्टिस में डर निकल गया है, तो तुम रियल इंटरव्यू में जाओगे ना, तुम एक ऑरा के साथ जाओगे, एक स्माइलिंग फेस लेके जाना. मेरे को इंटरव्यूअर ने लास्ट में ये बोला, मतलब आई ऑल्सो अटेम्प्टेड मिस्टेक्स, मैंने थोड़े गलत आंसर दे दिए थे, बट यू हैव रियली गुड पोटेंशियल. दिस स्माइलिंग फेस ऑन व्हाइल अटेम्प्टिंग द जीटीओ टास्क एंड यू कैन क्रैक दिस एसएसबी. तो आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब एक प्राउड मोमेंट लग रहा था मेरे को कि हाँ मैं कर सकता हूँ. सो ऑलवेज यहाँ पे भी बोला जाता है पोलाइटनेस सबसे ऊपर रखो एंड सबकी हेल्प करो और एक तरह से स्माइलिंग फेस रखो. अपना कॉन्फिडेंस कभी गिरने मत देना. टैट पिक्चर्स की साइकोलॉजी टेस्ट, टैट पिक्चर्स एमास की मेरे में 11 में से 6 आई थी. और ऐसा हो गया था कि मतलब मैं
10 सेकंड देख रहा हूँ, मैं लिख रहा, और मेरे पीछे एनसीओ सर थे, तो इस मतलब मेरे लेफ्ट में एक विंडो थी, तो उसे लाइट आ रही थी, तो उसने देखा कि 2 पिक्चर में देखा कि 10 सेकंड में लिख ले रहा है, उसने पर्दा डाल दिया और मुझे दिख नहीं रहा, फिर भी मैं ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ कि हो जाएगा मेरे से, हो जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे आइडिया आए जा रहे। प्रैक्टिस इतनी करो, थीम्स इतनी बनाओ। न्यूज पेपर रीडिंग वन ऑफ द मेजर थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे तुम्हारी थीम भी आएंगी। आई स्टिल रिमेंबर उस समय कहीं फ्लड्स आए हुए थे असम में, एंड मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें एनडीआरएफ की टास्किंग थी, एंड टैग पिक्चर में मेरे में एक फ्लडिंग वाला सिचुएशन आया था, और मैंने वो पूरी टास्किंग जॉट डाउन कर दी। मेरा ऐसा हो रहा था कि यहाँ पे मेरे से भले ही 8-9 लाइन बन रही थी, वहां पे मेरे पास 12-12 लाइन की स्टोरीज बन रही थी। सो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। न्यूज मेरे बैच में सबसे 2 इंटरनेशनल 2 नेशनल पूछी, एंड द इंटरव्यूअर सेड इलैबोरेट वन ऑफ देम। मैं गया इंटरव्यू में, तो मेरे से पूछा, ही सेड ओके यस टेल मी 2 नेशनल न्यूज। तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ नेशनल, लो सर बता दी मैंने। एंड देन आई वाज रेडी कि अब बोलेगा कि सर या टू इंटरनेशनल बता दे। तो मैं ऐसे था कि ओके सर पूछो, बट उसने बोला नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट 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 करके उसने मुझसे 12 न्यूज पूछी, पूरे बैच में किसी से नहीं पूछी। एंड आई वॉज एबल टू टेल ऑल 12 विथ क्रॉस क्वेश्चन। अगर मैं बोलता था उससे कि प्राइसेस ऑफ हाइक इन द टोमेटो प्राइसेस, उसने मुझसे पूछा क्यों, मैंने पूरा उससे बता दिया। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो था ही मैं, तो वो भी हेल्प किया। और प्लस मैं न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी बताती होंगी अफसाना मैम कि क्रॉस क्वेश्चंस आते रहते हैं, कि एक कंट्री के बारे में अगर तुमने पढ़ा है तो उसके बॉर्डर और उसके कैपिटल, क्या वाटर बॉडीज है, तो ये सब काम आता है। एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एमास, शुरू में सबको ही लगता है 1 वीक में कि इसका क्या फायदा होगा। बिलीव मी, आफ्टर द कोचिंग एंड्स और तुम अपेयर हो गए एसएसबी के लिए, इट विल हेल्प। एक और बात थी, पीपीडीटी स्क्रीनिंग तो मस्ट है, ओआईआर इज अ मस्ट। तुम्हें लगेगा ये रीजनिंग क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जा रहे हैं, बट बहुत ओआईआर करके जाओ। आई वाज एबल टू डू इन 20 मिनट्स, 30 मिनट्स की जगह 20 मिनट मैंने ओआईआर करके खत्म कर दिया था, और मैं एकदम रिलैक्स था। पीपीडीटी में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपना जो यहाँ पे बोला जाता है कि पहले ऑब्जर्व करो, बेसिक्स है, ऑब्जर्व करो, ठीक है। एंड उस समय थीम का मत सोचो, पूरा ऑब्जर्व करो, बैकग्राउंड, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, व्हाट आर दे डूइंग। देन अपना बॉक्स फिलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। एंड देन स्क्रीनिंग के बाद जब तुम स्टोरी लिख लेते हो, देन यू हैव टू रिवाइज। यहाँ पे बोला गया होगा कई बार कि 10-10 बार अपने मन में रिवाइज करो, कान बंद करके कोने में खड़े हो जाओ, रिवाइज करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तुम नरेशन ऐसे दोगे, और अगर फ्रेशर्स भी है इसमें, तो नरेशन ऐसे दोगे, रिपीटर्स नहीं दे पाते वैसा नरेशन, क्योंकि तुमने एक बार इतना रिवाइज कर लिया, वो इट्स इम्प्रिंटेड इन योर माइंड, तो तुम बहुत अच्छे से वो करोगे। बाकी अपना कॉन्फिडेंस एंड करेज इज द मेन थिंग टू क्रैक एसएसबी। तुम्हारे देखो 16-17 टास्क हैं, एंड यू आर नॉट परफेक्ट इन ऑल, ठीक है, बट एक दो छोटी मोटी मिस्टेक होगी, तुम्हें उसमें गिरना नहीं है। अगले अटेम्प्ट में तुम, अगले टास्क में तुम पक्का आगे आओगे, उसके लिए मतलब टास्क अच्छे से कर लोगे, और वो दे आर नॉट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ वन टास्क, तो वो क्रैक कर लोगे तुम उसमें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, Yash. I think your smiling face has really helped, and I'm sure they, after hearing you, they'll also keep smiling, right? And that is what shows your confidence. Okay. And now let's go to Divanshu. What has been your method of preparation? Yeah, tell me. First of all, thanks to Director Sir and the entire AMAS faculty. And my experience was that first time after going from here, I was able to get into the stage one, but I got conferenced out. So the thing I did immediately after returning from Jalandhar after getting conference out was I tried to introspect where I was lacking, and I noticed that I have made little mistakes in psych as well as in GTO task. Interview was smooth, but the thing was there. I realized immediately that I need to start believing, and belief is the first thing everyone must have in themselves. And after that, what I did was continued my practice with a few of my friends I made in AMAS, and we used to sit down in the evening at 8 or 9, and we used to discuss as many themes as possible till Online you are able. yes sir, on VC or Google Meets, and we used to discuss till 1 or 2 a.m., and we used to discuss as many themes as possible. For any particular themes, you would get many themes pictures you will draw here, so keep that in mind. And sir, this time in Allahabad, I went confidently, and I observed the picture carefully. The thing was, the group was decent. No fish market was being created, but
you have to still find some way when you can productively add your point. So the theme was like in PPDT, the picture was like a water can was there and a man was writing something down. So I observed the what the group was discussing. So I realized they are going towards supplying water to some place or starting a water supply business. So in that मैं उस फोटो में if I'm not wrong एक शॉप का सीन है. शॉप का सीन है सर, 20 लीटर वाली जो ऐसे बाहर बॉटल पड़ी है वो पड़ी है, डिस्पेंसर पे उल्टी लगती है dispenser पे सर. लगी हुई है ना. Yes, sir, that picture. So I observed ki where group is going. So in that moment, I added 2 points. First was that we can add the purification process, and then being from Rajasthan, I added it could be a problem in remote villages in Thar Desert. So that is the location where we can supply the water to. So these points were added, and this was the thing. You have to relate to the picture and link, stay linked. How was the psych? Yes, sir. Sir, day two psychology test was good, and out of 11 themes, I can remember 8 were very relevant. Even if they are not exactly the same, you will find that you are able to implement new themes. And as my friend said, stay updated with the news and what the things are going on. NDRF, new schemes that government is launching, international missions. So anything you can include. Just make sure you have organized your theme in a good way, in a proper order, and that will do the thing for the TAT. And sir, about VAT, I was able to get the second part of DIY book, and most of the words from there only, and they were very decent words. Not, maybe out of 60, 2 or 3 words are there which are maybe new, but the rest were very familiar to us. सारा जो बुक में वर्ड्स डाले हैं वो स्टूडेंट्स ही इकट्ठे करके डाले हुए हैं, तो आने ही आने हैं वो वर्ड्स. Yes, sir, definitely. DIY 2 वॉल्यूम है ना, देखिए आपने. उसमें जो भी वर्ड्स हैं 360 के करीब वर्ड्स हैं, तो सारे स्टूडेंट कलेक्शन, कोई 10 कोई 12 ऐसे इकट्ठे करके आई हैव गिवन इट बैक टू द स्टूडेंट. एंड सर द थर्ड थिंग इन साइक इज SRT. SRT में दोनों चीजें काम करती है. अगर आप टू द पॉइंट 2 sentences में अपना रिएक्शन लिख रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन. एंड if you are explaining your course of action in SRT, that is also fine. So I was able to get to 31st SRT, but I have elaborated them in stepwise manner. So in 4 to 5 sentences, my one SRT was written after comma and comma. So that did not that was not any problem at that moment. SD, I got to know a lot from my batchmates as well. Your SD is specifically seen by the interviewing officer. So Generally not. generally not, sir. But most of my friends told me that their questions, what specific questions they are asking. Like if you have written your weaknesses in your SD, then they will ask you your weaknesses. As I have written about my friends, that they know me as an adventurous person. So the first question about general interview was, what are the adventurous activities that you did? So I explained them very carefully. And one thing that is most important throughout the process from day 1 to day 5 is knowledge. And the more you gain knowledge, the more your confidence will increase. And in interview, sir, knowledge helped me a lot. Learning about myself, my family, I sat down with my sister, and started discussing with her that what could be the things that I like in you, what is your weakness, what could be the thing that I can tell in my father's weaknesses. I have made like 10 to 15 pages on my family itself, then 5 to 7 pages on my friends. Your friends weaknesses, know yourself, know your surroundings, know your environment. Then the thing came to sir, news was not asked with me personally. News related to my city was asked, something new going on in my city. So I was aware ki there is BSF headquarter and what is the new things going on there, and the new development projects that have been launched. Bikaner, sir. Yes, sir. He's So- the second boy of Bikaner. एक हमारा Shub, officer बन गया. Shubham Hari. Shubham Hari. Yes, sir, I talked to him. You talked to him? Yes, sir, I'll meet him. And sir, knowledge is the thing that will give you confidence. And in conference also, What was GTO tasks? GTO tasks were smooth. One thing I observed carefully was in GTO you have to
have group dynamics, and in group you have to say things that are relatable. You can cite personal examples also, not too personal, but things that everyone can relate to, so they will listen carefully. So once the topic about changing dynamics of women in workplace, take personal example, that let's look at the example of our family members also. Like our mothers are not mostly working professionals, but our most of our sisters are going in this direction. They are pursuing their passion, and they are getting into new careers. So these personal examples grab attention of your friends, and these are the things that happened in GTO. And sir, one interesting thing happened in my GTO. The first person of our group out of 10 got the topic honor killing in his card. He wanted to speak on honor killing, but maybe he was unaware or something. He spoke on mercy killing. So he said on mercy killing, and in the end, Killing is very different. yes, sir. So euthanasia. So in the end, I got the card, and in my card there were four topics, and only the mercy killing was there which I could speak on. Otherwise, others were blood donation, bureaucracy, and my life. So I was not aware. And mercy killing was, I also read in the news that it was in discussion in the parliament. So in that I was able to, when I listened every one of my group members lecturates, I was able to pick up some points also. I included them also. And the important thing, don't sit down before the 3 minutes. They are reminding you at the 30 second 2 minute 30-second bell that you have 30 seconds. So take your time, stay conscious, and try to conclude after 30 seconds. Maybe you have 20 seconds, and that moment you can get to your conclusion part. And about the conference, sir, in conference it was Questions or normal? one question was asked about my city. As I have made 2 pages on my city. They've done that. See, the knowledge thing is very important. I am emphasizing on it again and again. If someone asks me to speak on my city, I can stand here and speak for 1 or 2 hours also. Uh, so try to be aware of whatever things are that are around you, whatever is in the news, people around you, your friends, and you all are very fortunate कि you are getting a longer term of batch. Earlier they were 3 weeks. Now it's about four. Both options, 3 and 4 weeks. Okay, sir. Some of them have opted for fourth week. Certainly they will. Fourth week is going to be an add-on for you, and continue your preparation on the same lines, and keep staying updated. AMAS news is almost every day update. Homework, they all script timing. Sir, we used to get, sir, lack of sleep की आदत हो गई थी सर. यश को भी बता दो. कम सोने की आदत हुई? अरे फौज में जा रहे हो तो मेहनत तो करनी, आदत डाल लो, पहले हफ्ते में आदत डल जाती है, लंच वन सब मिल रहा है, दोस्त बन जाते हैं, एक्सप्लोर करो, हो जाता है होमवर्क का, ऐसा कुछ नहीं है, रोना नहीं है उसके लिए, मेहनत करनी है। फौज में जा रहे हो भाई, फौज, हमें तो सर ने यही बोला था कि फौज में जाना है, यहाँ तो मेहनत होगी, तो यहीं से स्टार्ट कर दो, आदत पड़ जाती है, तो कोई हार्ड नहीं है। अपना टाइम पंचुअल रहो, पहले होमवर्क कर लो, फिर मस्ती कर। हमने तो मस्ती, आई वाज द वन ऑफ द नॉटिएस्ट इन क्लास। जैसी मिठाई आती, जैसे तुम लोग चिल्ला रहे थे, मैं आगे आगे बैठ जाता था, पहले ही पीछे भले ही बैठा रहा हूँ क्लास में, जैसी मिठाई आती थी सबसे पहले आगे आगे बैठ जाता हूँ, मॉनिटर से दोस्ती करता था कि मेरे को 2 पकड़ा दे, 2 पकड़ा दे। तो इट्स लाइक कि अपना मस्ती करते रहो, और होमवर्क इज प्रायोरिटी, ये तो है, होमवर्क प्रायोरिटी रखो अपनी। इवन द एसीसी कैंडिडेट्स इन आवर बैच, वो भी बहुत हेल्प करते थे। अगर उनसे मैं जाके पूछ लेता था कि एयरफोर्स का कल्चर क्या है, आई एम मतलब फॉर आर्मी बैकग्राउंड, मेरी सिस्टर भी अभी एमएनएस कमीशन हुई है, एंड माई डैड इज फ्रॉम आर्मी। तो मुझे आर्मी का तो उतना नॉलेज था, बट एयरफोर्स का एक्सप्लोर करना था। एसीसी गाइज वर सो हेल्पफुल, उनसे बात करो, वो अपना बताएंगे एयरफोर्स का क्या कल्चर है, कौन कौन से वेपनरीज हैं। तो ऐसे एक्सप्लोर करोगे तो अपने आप होमवर्क उसी में हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेसिक होमवर्क तो यही रहता है ना, एक्सप्लोर करो, अपने नॉलेज करो, मम्मा पापा से बात करो, सिटी के बारे में पढ़ो, तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा कि भाई मुझे तो अपनी सिटी के बारे में ये तो पता ही नहीं था। जब तुम होमवर्क करोगे तो इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बेसिक वही है। एंड सर, इन द एंड कॉन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था मुझसे। एक तो जनरल क्वेश्चन है, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, या फिर हाउ वुड यू लाइक टू रेट योर ओन परफॉर्मेंस, ये तो है ही। मेरे से पर्सनली पूछा गया था कि इज देयर एनी आर्मी डिवीजन लोकेटेड इन बीकानेर, एंड एज अ सिविलियन दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू नो दिस, बट 24? yeah, I told 24 rapid,
and it is also known as Ranbakura. And I was about to go on with the things because I was aware, I had gained knowledge about this thing. I was also knowing the name of the GOC and everything, its history, how it was created from the uh, princely states army. So the thing is, keep gaining your knowledge and keep learning. All the best to everyone. Thank you, sir.